Okay, so I guess we are live. Everyone on YouTube as well as LinkedIn, Facebook. Can you guys drop a quick feedback if you guys are able to hear me? Just give me a quick heads up. Is everyone able to hear me? Drop a yes or no in the chat, guys. How are you? How's everything going on? Okay, so hi Nandini. How are you? Hello Rahul. Hello Kashish. Hi Aman. कैसे हैं सब लोग यार? Hi Krishna. Hi Ashok. Hi Aditya. Is everyone able to hear me properly? सबको आवाज आ रही है मेरी? Is everyone able to hear me properly? Okay, cool. What about people at YouTube? YouTube पे भी बता दो यार फटाफट. Uh, क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Okay, cool. ठीक है. So we are here for a very important announcement. Okay, so George says he's from Belgium. Welcome George, welcome. So there's a very important announcement that I have to make. Right. थोड़ी बात करेंगे यार. थोड़ी आपके questions लेंगे. एक बहुत important announcement है. So we'll do that. Uh, and then just let me check if everything's going on. Cool. Okay. So for all those people who don't know me, I am Sanket Singh, currently working as a software development engineer at LinkedIn. I'm a former software developer at InterviewBit as well as a former product engineer at Coding Blocks. I cracked the Google Summer of Code 2019 under Berkman Klein Center at Harvard University. Currently, I'm the #1 educator in the Unacademy's competitive programming track. I got offers from LinkedIn, Sprinkler, Dunzo, Works Application Singapore, Grofers, Interbit, as well as Splashlearn. I was a former research intern at the Indian Space Research Organization at the Ahmedabad Bhopal Center in Gujarat. Till now, I've taught more than 7,500 programmers in data structures and algorithms and fundamental of computer science. And currently, they are working in big tech giants like Amazon, Walmart, SanDisk, etc. I got rank one in few of the CodeChef long challenges and also won the Infosys Digital Mechathon at the Infosys Chandigarh Center. So this was a short introduction about me. This was a short introduction about me for all those people who don't know me, right? Okay, so Raj from YouTube is also saying that everything seems fine. Okay, give me a second. So this is a very important announcement. This is going to be an important announcement. Uh, so, like, I just wanted to ask that how many of you guys want to learn some advanced concepts, some intermediate level concepts like aocratic and advanced string matching, or maybe you want to explore things around 2D segment trees, or maybe parallel binary search, topics like bit masking with DP, pruning and backtracking, Fenwick tree, game theory with NIM games, number theory, including Wilson theorem, Fermat theorem, lots and lots of things in competitive programming. So these are some hot topics in competitive programming, which are also somehow relevant for your upcoming interviews. So how many of you guys have heard about these and how many of you guys want to learn about these, right? Okay. So like if you guys feel that you guys want to explore these kind of topics, if you guys want to explore more around competitive programming, so this is going to be an important announcement for you guys. सबके लिए काफी important announcement होगी. Hello Aman. Hello. So we have just started an exclusive intermediate batch of Summit. So the batch name is Summit for all those people who have already got some knowledge around basic loops, for loops वगैरह की थोड़ी बहुत आपको knowledge है, things around that, and you want to explore more into competitive programming, into interview preparation, थोड़े advanced topics पढ़ने हैं like advanced DP,
like from introduction to DP to advanced DP, introduction to recursion to advanced recursion, introduction to segment trees and range query problems to advanced range query problems with 2D segment trees, merge sort trees, Fenwick trees, so on and so forth. If you want to explore and if you want to level up yourself, this is going to be a really important announcement, and this is going to be a really good opportunity for all of you, because we have just launched our new summit batch recently, and we are getting the enrollments for that. So with this batch, you will be getting a good structured learning path and a good optimized learning path for all those people who want to level up their skills into programming. मतलब आपको अगर कोई भी लैंग्वेज आती है, लाइक यू हैव स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस, यू हैव स्टार्टेड विद जावा, और आपने लैंग्वेज के थोड़े बहुत कॉन्स्ट्रक्ट सीख लिए हैं, so now the next step forward is going to be to learn data structures and algorithms. Or data structures and algorithms is going to be a very huge topic if you want to learn, because there are a lot of things. मतलब आप basic data structure से start करेंगे तो there is stacks, queues, linked list, binary trees, basic binary search trees. थोड़ा सा intermediate data structures पे आते हैं, so there are priority queues, there are heaps, Fibonacci heaps, and a lot of things are there. So जब हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं, so there are segment trees, there are Fenwick trees, there is graph algorithms. So there is a huge bunch of topics, there is a huge bunch of things that you have to learn, and a lot of people feel that okay, where should we shall we start from, कहाँ से start करना चाहिए, कौन सा topic पहले required है, what is the exact topology in order to learn everything, right? So you say, if you want to have a structured learning path and optimized learning path, then this is going to be your way to go forward, right? Raj, this session is going to be focused for all those people who want to explore more around data structures and algorithms, right? Uh, okay. So few people are asking how to apply for the advanced data structure. So यार देखो, इस batch में we will be starting from the intermediate level. मतलब आपको we are not even expecting कि आपको recursion जैसी चीज आती होगी. We'll be starting things from basic sorting and searching. मतलब हम लोग जब चीजों को start कर रहे होंगे, so we'll be starting with basic sorting and searching. और sorting and searching के ऊपर हम लोग काफी in depth बात करेंगे. So like sorting and searching में we'll see कि how to apply merge sort, क्विक सॉर्ट कैसे अप्लाई करते हैं. तो सब लोगों ने मर्ज सॉर्ट पढ़ा होगा. मैं सब लोग मतलब काफी लोग हैं सुन रहे हैं, तो चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ. सब लोगों ने मर्ज सॉर्ट पढ़ा होगा. हम मतलब बेसिक अगर तुम लोगों ने सॉर्टिंग पढ़ी है, सो यू गाइस माइट बी नो कि अच्छा ठीक है, लेफ्ट साइड को सॉर्ट करके ले आओ, राइट साइड को दो हिस्से में एरे को बांटो, लेफ्ट को सॉर्ट करके लाओ, राइट को सॉर्ट करके लाओ, दो सॉर्टेड एरेस को मर्ज कर लो. बट क्या कभी तुमने ये सोचा है कि क्यों मर्ज सॉर्ट सिर्फ दो हिस्से में एरे को डिवाइड करता है? व्हाई नॉट divide our array into 3 equal parts? Why not divide the array into 4 equal parts, so on and so forth? So these kind of questions we are going to tickle in your mind, right? कि selection sort ठीक है, अगर stable algorithm नहीं है तो क्या selection sort को stable नहीं बनाया जा सकता? किसी ने अगर heap sort के बारे में सोचा होगा, so what should have been the perfect intuition to think about heap sort? These kind of things are we are going to discuss in the all of the concept, not even only for sorting and searching, for everything. So searching where we will see binary search, modified binary search formula. वो formula आता कैसे है? We'll apply binary search on answers, ये तो सबने पढ़ा होगा. But binary search on real numbers, कि यार जब तुम्हें decimal values given है तो epsilon tricks को कैसे optimize किया जाता है और real numbers पे कैसे binary search लगाते हैं. पैरेलल बाइनरी सर्च, मिनी मैक्स प्रॉब्लम्स, बाइनरी सर्च के ऊपर इतनी सारी चीजें हम लोग देखेंगे. विल कंपेयर बाइनरी सर्च विद टर्नरी सर्च, की क्या बाइनरी सर्च टर्नरी सर्च से सच में बेटर है, अगर बेटर है तो क्यों बेटर है, और टर्नरी सर्च का अपने में क्या रेलेवेंस है. विल आल्सो डिस्कस अ लॉट ऑफ इंटरव्यू प्रॉब्लम्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज टॉपिक्स. सिमिलरली विल देन मूव फॉरवर्ड टू डेटा स्ट्रक्चर्स. पहले थोड़े बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, इनके ऊपर बात होंगी और इनकी इंटरव्यू प्रॉब्लम डिस्कस करी जाएंगी. देन देयर विल बी एडवांस्ड एडिशनल सी प्लस प्लस एंड जावा बेस्ड कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के इंटरव्यू में oops वगैरह के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले. So this will be a very, I would say, highly curated and highly structured content that you are going to get out of it. Jasmeet, I'll tell you how you can apply for this and what's going to be the structure. So Rambo is asking how to get a medal in iOS. Rambo, one of my student recently cracked the zonal Olympiad. He might be appearing for the international one also. I hope that he will crack that one as well. So Bharat Singla is one of my student and he has cracked that. Recently, I got the news. So he was programming since last 1.5 year and he was really good at it. So I guess you can also try for that. तो यार देखो, मतलब the main agenda for this notification is to get you included in what we are going to offer, right? तो जसमीत पूछ रहे हैं कि
What if we only have a Python background? So just means we have a parallel batch running for Python as well, and later we will merge the people of Python with C++. हम लोग आपको C++ के वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे जो पाइथन के ऊपर आपको चाहिए होंगे टू गेट अ शिफ्ट टू सी प्लस प्लस, एंड देन यू कैन ऑल्सो कोड इन सी प्लस प्लस एज वेल. बट ऑल दोज पीपल हु नो इधर पाइथन और जावा, द कॉन्टेंट इज गोइंग टू बी इक्वली रेलिवेंट फॉर ऑल ऑफ देम, बिकॉज हम लोग लैंग्वेज पे फोकस नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट, कि यार एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर्स को अप्लाई कैसे करना है, सोचना कैसे, द थिंकिंग बिहाइंड इट. मतलब क्वेश्चन तो तुम ऑनलाइन कर सकते हो, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट ऑनलाइन, बट हाउ टू थिंक अबाउट इट, हाउ टू गेट एन इंट्यूशन बिहाइंड इट, दैट्स द मेजर गोल दैट वी आर गोइंग टू फोकस. Okay. This is going to be majorly focusing on all freshers जो भी अभी कॉलेज में हैं या जस्ट पास आउट हुए हैं और preparing for ACM ICPC or maybe preparing for IOI, preparing for your upcoming interviews, so on and so forth. Right? Cool. So like as I was saying, फिर हम लोग थोड़ा सा इंटरमीडिएट स्टफ देखेंगे कि यार स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशंस कैसे लगाया जाता है, थोड़ी रेंज क्वेरीज को कैसे लगाया जाता है, ट्राइज क्या है, हीप्स क्या है. देन हम लोग नंबर थ्योरी पे आएंगे. नंबर थ्योरी में हम लोग एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आई कैसे हैं, यूलर 5 फंक्शन के बारे में देखेंगे, विल्सन थ्योरम देखेंगे, फर्मेट थ्योरम देखेंगे, फिबोनाची के ऊपर काफी सारा डिस्कशन होगा, और दूसरे नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स होंगे, मैथ्स के कॉन्सेप्ट होंगे लाइक मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन, उसके बाद तुम्हारे प्रोबेबिलिटी एनालिसिस के क्वेश्चंस होंगे. देन विल बी कवरिंग अप रिकर्जन, डीपी एंड बैक ट्रैकिंग. बैक ट्रैकिंग में बिट मास्किंग विद बैक ट्रैकिंग, प्रूनिंग इन बैक ट्रैकिंग, एसीएमआईसीपीसी लेवल के कुछ क्वेश्चंस होंगे. हम लोग काफी इन डेप्थ बातें करेंगे, हर चाहे इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट हो, चाहे बिगिनर कॉन्सेप्ट हो, चाहे एडवांस कॉन्सेप्ट हो लाइक कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री. इसमें हम लोग पॉलीगन्स के ऊपर बात करेंगे. विल डिस्कस अबाउट जार्विस एल्गोरिथम, एडवांस डायनेमिक प्रोग्रामिंग में डिजिट डीपी, डीपी विद बिट मास्क, SOS DP on trees, DP on graphs, a lot of things, right? There will be a lot of things. Segment tree में merge sort tree, basic segment tree, lazy of segment tree, 2D segment tree, हर चीज के ऊपर बहुत ही in depth discussion होगा. So this is going to be really structured content, and the people who are going to teach are always as you know, are those people who have been there, who have done that. So people are ACP NCPC world finalists, people are former GSOCers, they are currently working in top big tech giants that you guys also want to work with, like Google, AppDynamics, Flipkart, LinkedIn, and a lot of companies like Code Nation. So this is the educator panel who will be teaching you guys, and every educator is going to be adding some value to your overall experience into the batch, right? So Alberta, you can join today as well, because we are giving some refresher classes for all those people who have just joined. So we are giving some revision classes if you have missed it. Although we have not started with the sorting and searching part yet, we have just given some introduction कि यार ठीक है, कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो those people who know a bit beginner level stuff but इंटरमीडिएट के लिए भी बिल्कुल रेडी नहीं है, तो उनको थोड़ा सा रिवीजन टॉपिक्स दिए जा रहे हैं. बट वी आर फ्रॉम टुडे और एग्जैक्टली आई गेस फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग कॉन्सेप्ट्स. सो यू गाइस कैन डेफिनेटली एनरोल एज सून एज पॉसिबल, राइट? ओके, सो अर्चित पूछ रहे हैं आईसीपीसी के अलावा और कौन से कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो देयर इज आईओआई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है. यू कैन पार्टिसिपेट इन फेसबुक हैकर कप, यू कैन पार्टिसिपेट इन स्नैकडाउन, किकस्टार्ट. देयर आर लॉट ऑफ आई वुड से contests out there, so you guys can definitely check them out, right? Okay. So Raj is asking, I'm trying to solve CP questions but unfortunately failed to solve. So Raj, I would say कि try to explore new problems, new concepts को पढ़ने का try करो. Try to give as much as contest as possible. That would be much relevant for you. राइट, ओके. सो थोड़ा कॉस्टिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या कॉस्टिंग स्ट्रक्चर होगा. उससे पहले आई आल्सो वांट टू नोटिफाई कि देयर विल बी टीचिंग असिस्टेंट फॉर योर डाउट सपोर्ट, एंड यू विल बी आल्सो गेटिंग द कॉन्टेस्ट लेवल प्रॉब्लम्स की तुम्हें हर कोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, हर टॉपिक के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्टेस्ट होगा. सो लाइक लेट्स से देयर इज अ कोर्स ऑन ट्रीज एंड ग्राफ, सो देयर विल बी अ सेपरेट कॉन्टेस्ट ऑन ट्रीज एंड ग्राफ. इफ देयर इज अ कोर्स ऑन डिजिट डीपी, सो देयर विल बी सेपरेट कॉन्टेस्ट फॉर डिजिट डीपी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड एवरी क्लास, हर क्लास के एंड में यू विल बी गेटिंग क्विजेस. एवरी क्लास के बीच में यू विल बी हैविंग टीचिंग असिस्टेंट along with your mentor, so on and so forth. So this is going to be the subscription plan. So this is not a subscription for just this batch. If you will apply for the subscription, you will be able to see everything which is available on Unacademy's competitive programming track. मतलब इस batch के parallel भी अगर कोई batch चल रहा है and if you want to watch that, you can definitely watch that.
कोई ऐसा कोर्स है जो इस बैच में इंक्लूडेड नहीं है, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट. सो इट्स लाइक एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दिस प्राइस रेंज, and it is going to cost you even less than 90 rupees per day if you look for a whole year plan. So you can use the code Sanket 10 to avail maximum possible discount. But overall, you are just going to pay even less than 90 rupees per day if you'll just ask for it, right? कुणाल कह रहे हैं कि क्या इसके लिए कोई लैंग्वेज आना पहले से जरूरी है? आई वुड से कि कोई भी एक लैंग्वेज अगर तुम्हें बेसिक आती है तो चलेगा. इफ यू इवन डोंट नो एनी लैंग्वेज, वी हैव अ बिगिनर लेवल बैच आल्सो, वेयर वी आर टीचिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेलो वर्ल्ड से कैसे लिखते हैं, इन बोथ इन ऑल थ्री, पाइथन, सी प्लस प्लस एंड जावा, तीनों में पढ़ा रहे हैं. सो यू गाइस कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दैट. एंड इफ यू विल बाय द सब्सक्रिप्शन, यू कैन parallelly watch both of the batches like according to your pace. All the classes are going to be live, sari live classes only, there won't be any recorded content, so you can interact with your mentor in the live session. Bhavya, as I said, the classes will be live, no recording will be there. Like you can watch the record live lecture later when the live lecture has ended, but the every new lecture, every fresh lecture will be live. The instructor will be teaching live. Sort of Sujit, the criteria for certificate will be obviously तुम्हें जो भी contest है, you have to submit the assignments on time, you have to avoid plagiarism, and you have to be on the top of the leaderboard as well. So I guess assignment will be the major criteria for that. Right. Saurav, can you एक बार send your doubt again? I might have missed that. Vinay is saying, is this for JS programmers? Vinay, I will say किसी भी language में अगर आप code कर रहे हो, this is going to help you. But competitive में generally we focus on C++ and Java क्योंकि काफी fast रहता है उनसे submission. So I would say कि C++ और Java कभी अगर हल्का फुल्का context हो, that will also be helpful for you. So you can just go to the link in the description. You can find the link in the description and just use the code Sanket 10 to enroll for the batch. Like if you'll see in the longer run, if you'll see in the longer run, like in a 12-month run, so this is going to cost you even less than 90 rupees per day. So this is going to be very, very cheap if you will see the overall, I would say, package that you are going to get around it, right? Akshay, I have opened the subscription plan in the screen. You can check it here, right? Raj is saying, sir, Bhaiya, will I easily solve 800 to 900 rating question on code forces, but more than 900 rating, I get stuck. What should I do to solve? Raj, I would say try to explore new concepts. Try to explore new concept. Editorial पढ़ो, थोड़ा contest देखो, and maybe you can also check out for the lectures that we are taking. We also sometimes take free lectures. We also have some batches. You guys can definitely check this out. ताकि तुम्हें कोई ऐसा topic है जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है और उसके ऊपर question आ रहा है, then you will be able to get that, right? So Kiran says, "Hi Sanket, I'm not a fresher, but I'm still interested to learn this course. Also, some big product company ask these type of questions, but as you said, it's live. So do you have to take care of the people timing outside UK as well?" So Kiran, can you like ping me separately, like what are your timing preferences? I might be able to share you what timings we are preferring and what we can do about it. Maybe you can ping me separately and we can discuss that. Rambo, as far as I know, there are some rules for that for direct admission, as far as I know. Ayan is saying, will this be helpful for placement of 2022 batch? Yes, Ayan, because this batch is going to focus on both competitive and interview preparation, both of the things, and we will also parallelly launch a separate interview preparation batch. So आप दोनों चीजों को साथ साथ भी देख सकते हो. Like you can access all the batches at once. So it's not like कि आप एक ही batch के लिए enroll कर रहे हो. This pricing will include all the batches, all the courses, and every live stream that we are going to do, right? Roshan, if you have a context of Python, then also this is going to be relevant for you. Does that make sense? Cool. Let's just take few more doubts. Saurav, MCA कंप्लीट किया है 2020 में, बट टीयर 3 कॉलेज से हूँ, बट मैं प्रोग्रामिंग कोडिंग सीखना चाहता हूँ. और ओके सौरभ, सो आई वुड से कि थोड़ा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग को एक्सप्लोर करो यार, थोड़ा डीएसएल को एक्सप्लोर करो, इन सारे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करो कि यार हाउ यू कैन अप्रोच द प्रॉब्लम्स ऑफ दीज टॉपिक्स. अगर तुमने किसी टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा है तो उनको देखो. जैसे मतलब कई लोगों ने बाइनरी सर्च पढ़ा होता है, बट हाउ डू यू अप्लाई पैरेलल बाइनरी सर्च ये नहीं पढ़ा होता. रियल नंबर पे बाइनरी सर्च कैसे लगाना है ये नहीं पढ़ा होता. मिनीमैक्स प्रॉब्लम को देखते ही बाइनरी सर्च कैसे लगाना है, बाइनरी सर्च को और ग्राफ को मिक्स करके प्रॉब्लम्स कैसे बनानी है. सो दिस काइंड ऑफ थिंग दैट यू नीड टू एक्सप्लोर. बेसिक बाइनरी सर्च पढ़ा होगा एमसीए की स्टडीज में, बट यू हैव टू एक्सप्लोर सम एडवांस कॉन्सेप्ट्स बिकॉज कंपनीज लाइक गूगल, कंपनीज लाइक डायरेक्ट आई कोऑर्डिनेशन डू आस्क a lot tougher question than you will be expecting them to ask, right?
uh, Sayatni, I would say that we will be parallelly having multiple batches, so you can also explore the new batches, or maybe if your topic are left, you can also cover up them later, because we will be having separate courses per separate lectures for per course after this batch also. So don't worry on that part. Siba is asking how much time, how much it will it be help for experienced people appearing for interviews? It focus more on ICPC. So Siba, if you are also preparing for interviews, then also it is going to be helpful. Like if you are preparing for big companies, big MNCs who focus more on DS algo, and you are looking out for SD1 or SD2 kind of opportunities, this is going to be very relevant for you. Uh, Ashlesha is asking कि how many hours a day we should dedicate to become a top level programmer. So Ashlesha देखो, this is dependent on person to person. मतलब हो सकता है किसी का 2 घंटे काम करके चल जाए. Some people might have to even give 8 hours. It depends on what capacities you have and what kind of learning experience you have been going through. So I would say if you dedicate 4 to 6 hours, then also it can be like really fine. Kiran says, I also have worked with Java and used C++ in college, but will the course help a bit about teaching Python and revising C++ concepts as well? Yes, Kiran, Python ke liye we have a separate batch also. So if you'll opt for the subscription, you can check out the Python batch as well. And also for advanced C++ concepts and advanced Python concepts also, we are also going to teach that. You can see here that we are also going to teach additional concepts in C++, which will be advanced C++ concepts like Lambda functions in C++, then smart pointers in C++, STL for C++, so on and so forth. Right. सौरभ सिंह सर इससे हेल्प मिलेगा लॉजिक इंप्रूव करने में. सो सौरभ देखो, व्हेन you guys can check out my free lectures also, and the free lectures of rest of the instructors also. The major thing that we focus on, हमारा ये focus नहीं है कि यार आप बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाओ. We want you guys to make a thinking process कि यार अगर ये क्वेश्चन पहली बार दिखता और जो टूल्स तुमने अभी तक पढ़ लिए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स तुमने अभी तक पढ़ लिए हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके सोचना कैसे है. एल्गोरिथम तो इंटरनेट पे तुम्हें कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है, बट सोचना कैसे है. एडिटोरियल अगर तुम्हें नहीं पता है कि पहले कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, हाउ यू कैन थिंक अबाउट इट. इट्स नॉट अबाउट रोट लर्निंग top 500 questions and just go about it. It's all about how to think about an algorithm, and not only questions like basic algorithm like heap sort. तुम खुद सोचो कि किसी को अगर पहली बार heap sort के बारे में सोचना है और उसने heaps पढ़ा हुआ है, तो वो कैसे सोच सकता है कि heap sort लगाया जा सकता है. So you can map it through selection sort कि यार अगर हमें selection sort पता है and we want to know कि यार हमारे unsorted region में minimum कौन सा है, तो अभी हम लोग minimum linear search करके लाते हैं. How we can optimize this linear search? शायद बाइनरी सर्च लगा पाए, बट उसके लिए एरे सॉर्टेड ही चाहिए थी, तो बाइनरी सर्च तो नहीं लग सकता. और कौन से तरीके से हम लोग मिनिमम एलिमेंट निकाल सकते हैं. देन वी कैन से दैट ओके वी हैव अ डेटा स्ट्रक्चर जो हमें O1 में मिनिमम दे देता है, और उसको रिमूव करने के लिए लॉग एन टाइम लगाता है, विच इज गोइंग टू बी हीप. तो ऐसे इंट्यूशन से सोचेंगे कि जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसके बेसिस पे कैसे नए कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना है. दिस विल बी द मेन फोकस, और इसी से लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव. डज दैट मेक सेंस? Vaibhav, this will be a paid batch. This is going to be a whole 1 year batch, right? If you want to explore the free lectures, you can definitely explore that. If you want to unlock the free lectures, कुछ free lectures हैं platform पे, you guys can unlock them using the same code. But if you want to apply for the subscription plan, these are the subscription plan out there. Dhanashri, this will concepts in the advanced course will be game theory, number theory, mathematics, advanced graph algorithms, digit DP, DP with bit mask, SOS DP, DP on trees, computational geometry including polygon theory, previous year ACM ICPC problem and everything. Okay, so Soumya, where are the link of the batches? I'm looking for some basic batch for my brother. The link for the basic batch is in the description. If you are watching it from YouTube or LinkedIn or Facebook, I guess you will be able to find that in the description of the post. तो एक बार post का description check कर लो यार, you will be able to find that, right? Okay, मैं एक बार लिंक शेयर भी कर देता हूँ. If you want to know the link, I can share you that. Bhavya is asking, sir, I am a 2021 batch student, so if I take the subscription, can I study at my pace like watching recording? हाँ भव्या, every lecture will be live, और जो lecture live हो जाएगा उसकी recording भी तुम्हें available हो जाएगी. तो नया content सारा live आ रहा होगा, but if you like somehow miss that, you can later watch it recorded as well. And TA support will be continuous, so don't worry on that part.
And like our TAs also, so the whole TA team are also 6 star or 7 star on CodeChef. So ऐसा भी नहीं है कि TAs are like some random college students. They are like pro competitive programmers, top 25 programmers from India. So don't worry on that part as well. So if you want to know the link, I can like share you the link, guys. Uh, just a second. So this is the link. If you want to see, this is the link for the summit batch. You guys can definitely check this out. I can share the link on YouTube, and probably you will be able to find that in the description also, but I can like share it on YouTube as well. Right? Cool. Is it good decision to shift from C++ from Python for CP only? So Brahmanya, I would say this would be a beneficial decision क्योंकि आगे चल के थोड़ा Python दिक्कत कर सकती है. Like if you are asking about the total number of like all the topics, you can see the brief topics here. Brief of the topics here. This will be a 1 year long batch. राजेश सिंह, जैसे मुझे कैडनेस एल्गोरिथम पता है, लेकिन जब कोई क्वेश्चन कैडनेस एल्गोरिथम का आता है तो उसमें टाइम मुझे उस टाइम मुझे समझ नहीं आता प्रॉब्लम कैड ने कैसे लगाएं. सो कैसे पता लगाएंगे प्रॉब्लम कौन सी है. राज, दिस इज द पार्ट ऑफ इंट्यूशन बिल्डिंग कि अगर आपने कोई चीज ऑलरेडी पढ़ ली है एंड कोई नया क्वेश्चन आता है, सो हाउ यू कैन थिंक अबाउट इट. द बेस्ट वे इज गोइंग टू बी एलिमिनेशन, कि हम लोग कुछ एल्गोरिथम्स को एलिमिनेट कर देंगे कि यार ये तो नहीं लग रहा. फिर जो बचे हुए एल्गोरिथम्स हैं उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पे सोचेंगे एंड देन उसके ऊपर पे कुछ फिल्टरिंग करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो देयर एग्जिस्ट अ होल इंट्यूशन बिल्डिंग प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू टीच यू हियर, राइट? Okay, so one guy is saying, can we extend our course duration? Like suppose we have taken for 1 month and then we want to extend. I don't think 1 month subscription में कोई extension possible है, but you guys can definitely ask to the support for that. I'm not sure about 1 month subscription. 1 month के लिए भी है, ठीक है, 1 month में भी है. You guys can definitely extend, मतलब but you have to pay the extension fee probably, and then you can extend from 1 month to like bigger subscription plan. So you guys can first check out 1 month of the course. अगर तुम्हें सही लग रहा है, so then you can like proceed and pay for the rest of the part. Renewal है. You can renew. You guys can anytime renew it. Dhanashri, the maximum possible discount available will be applied on the checkout process in the cart. Subramanya, as I said, I would say yes. A shift to C++ would be beneficial. Does that make sense? Any other question, guys? किसी को कोई टॉपिक के बारे में है कि यार क्या हम लोग ये चीज कवर करने वाले हैं, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक रिक्वेस्ट दैट यू वांट टू हैव, सो ऑन एंड सो फोर्थ. श्रेयांश इज सेइंग डेव वर्सेस सीपी. श्रेयांश, वैसे तो देखो हमने ऑलरेडी इस पे काफी बार बात करी हुई है, मैंने काफी सेशंस लिए हुए हैं, बट आई वुड से इफ यू आर अप्लाइंग फॉर सम एसडी वन काइंड ऑफ अ रोल, सीपी विल बी मच मोर ऑफ अ रेलेवेंस, क्योंकि उस कंपनी में, जिस कंपनी में तुम जाओगे, उस कंपनी के डेव तुम्हें वहीं सीखने को मिलेगी. जो डेव तुम हैकाथॉन्स वगैरह में करते हो, दैट इज जनरली नॉट दैट रेलेवेंट. सुमित, आई वुड से C++ विल बी बेटर. यस राजेश, अगर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से देखते हो तो पाइथन विल बी वेरी गुड टू गो फॉर इंटरव्यूज. किरण, इन इंडियन टाइम दिस विल बी लाइक इन इवनिंग. इवनिंग में यू गाइस कैन एक्सप्लोर दैट. सो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बारी कि क्या टाइमिंग्स वगैरह हैं. सो यू गाइस कैन सी, अभी देखो मतलब हम लोग कुछ कैचअप क्लासेस हैं कि इन केस आपने कोई क्लास मिस कर दी हो, या कुछ कैचअप क्लासेस हैं. मेजर कोर्स यहाँ से स्टार्ट होगा. सो जनरली इवनिंग में है एंड इवनिंग में चीज़ें चल रही होंगी. सो 6 PM के अराउंड अभी पुलकित ने स्टार्ट किया है. देन आई विल बी जंपिंग इनटू द बैच. आई विल बी टेकिंग अ फ्यू क्लासेस. रिया विल बी टेकिंग अ फ्यू ऑफ द क्लासेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ. Dhanashri, like there is no price for the course. There is a whole subscription plan for the whole Unacademy's platform, competitive programming platform. You guys can explore all the batches with one subscription. So एक subscription से you guys can explore every batch, right? There's no batch level cost. There is a whole subscription like Netflix. आप एक movie के लिए pay नहीं करते. You pay for the whole subscription. So whatever you want to watch, you can watch that.
एवरेस्ट इज फॉर बिगिनर लेवल, किल स्विच। एवरेस्ट इज फॉर लाइक प्योर बिगिनर, अगर तुम्हें फ्लो चार्ट भी नहीं पता है, वी आर गोइंग टू टेक दैट इन एवरेस्ट। जावा वुड बी फाइन ऋषिकेश, जावा वुड बी फाइन। यस अश्विन, फॉर बिगिनर्स ऑल्सो वी हैव द एवरेस्ट कोर्स। वहां पे हम लोग बिल्कुल नंबर्स की काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं कि यार 7 8 9 के बाद वाई डू यू राइट 1 0, वाई डू यू राइट 1 1, मतलब जो 10 और 11 लिखते हो ऐसे क्यों लिखा जाता है। बचपन में तो सीधा काउंटिंग पढ़ा देते हैं, बट ऐसे 1 0 ही क्यों लिखा, 1 1 ही क्यों लिखा, 1 2 ही क्यों लिखा, इस लेवल तक चीजों को बिगिनर लेवल पे लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद फ्लो चार्ट्स के ऊपर बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन होता है, एंड देन वी स्टार्ट विद द लैंग्वेज बेसिक्स इन पाइथन, जावा एंड सी प्लस प्लस पैरेलली। सो बिगिनर लेवल के लिए भी वी हैव द एवरेस्ट बैच, यू गाइस कैन चेक दैट आउट। Does that make sense? Ashish saying, hello sir, I'm from Tier 3 and want to prepare for SD role. How this course will help me? Ashish, you can like build up your competitive programming profile by learning these competitive programming concepts, and we will be covering interview perspective of every topic along with that. So you will be having like a coupled thing where you are also preparing for competitive contests as well as for upcoming interviews. And if you'll like opt for the subscription, later we are also planning to have one dedicated interview batch, तो आप दोनों चीजों को parallelly भी देख सकते हो. This is not going to be a batch level cost, it is a subscription, right? अंकिता, आई वुड से इन लेटर जब आप थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे देन आपको थोड़ा सी प्लस प्लस पे शिफ्ट करना होगा, क्योंकि मोस्ट एडिटोरियल्स वगैरह सी प्लस प्लस में होते हैं. सी प्लस प्लस थोड़ी फास्ट होती है, बट इन बिगिनर लेवल पे आई वुड से दिस वुड बी फाइन. सुमित, जावा टू सी प्लस प्लस की जरूरत नहीं पड़ेगी. Dhanashri, if you want the link, this is the link. You can also check out the link in the description. This is the link, right? I've highlighted the link here. You guys can check this out. Ashwin, if you are like pure beginner, if you don't even know any one language, then also you can opt for the subscription, because we have beginner batches parallelly running also. The subscription ki cost is not batch level. Again, I'm saying it's like for the whole dashboard you are going to pay. तो कोई भी course you want to explore, you guys can explore that. Dipanshu, you can explore CP3, Competitive Programming 3. Kiran, like we can plan, we have some plans for weekends, like few doubt classes and extra classes, and generally one class is of 1.5 to 2 hours, right? Nadeem is saying that competitive programming is going to be more about practicing more problems. Nadeem, I totally agree with that. But the main thing that a lot of people lack about is to how to think about the problem, right? So, like, let me ask you that when you first time read about heap sort, how did you go about it? Did you think in these terms ki, like if I don't even read about heap sort and I just know about heap, can I think that heap sort can exist in the nature also? कि पहली बार सोचा तो कैसे सोचा? What would be the first time thinking or the first time intuition about heap sort? Do you learn in that way? If you are going to learn in intuition building way, then new problems are not going to be troublesome for you, because you have the intuition building inside you. You know that whatever tools you have, how to apply them, how to think. It's all about how to build the thinking process. Questions already available hain, tutorials already available hain, but how can you think for them if you encounter them in any contest or interview? This is going to be the main USP for the batch. Does that make sense, Nadeem? Kill switch, if you have like missed any classes or you don't know the basic, these catch up classes are going to be for that. दीपांशु, CP3 में मोस्टली क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा अच्छी है. Yes, Region, the charges for the subscription are these, right? If you can if you want to explore the subscription charges, you can explore these. If you'll use this code, you can explore, you can get the maximum possible discount possible, right? Okay, Kiran, we can definitely discuss that separately.
what should be the ideal prep for INOI? So Dhruv, IOI और INOI के ऊपर शायद already कुछ sessions है. You guys can definitely check that out. Dipanshu, I would prefer blogs other than books, if you'll ask me. Right. Ashish, probably yes. Because the TAs are going to be like 7 stars. So we have Shrikant, we have Aman. They are like 7 star coders, and they are not college students. They are college pass out and dedicatedly going to be working as the TAs for your batches. So TA support is going to be very consistent, and they are not like random college students. They are 7 star coders on CodeChef. So that is going to add a lot of value in your learning. Uh, Devananjan is asking that should we start with C? Devananjan, you can definitely start with C, but at some point of time, you will feel the need for STL and classes. At that point of time, I would recommend you to shift to C++, but C can be the way to start for. Thanks, Dipanshu. Thank you. Nadeem, it depends on how. What, so this is a reference frame based question, I would say. So it doesn't make a lot of sense, because if you feel someone is noob, then there are some pro people out there as well. So it's all about which reference you are going to take to call someone that, right? I don't think that makes a lot of sense, right? Cool. So I guess that was all about the announcement, guys. I guess that was all about the announcement. Any more doubts? Any more questions from anyone? Then my both are going to be equal. No worries. No worries. Fair enough. Chalo. Cool. So thank you, guys. Thank you. Thanks for your time. Thanks for giving your half an hour to me. Thanks for watching. If you have any questions, you can like reach out to me or reach out to the support team of CodeChef and Unacademy. We would be really happy to have you guys. If you want to watch some free content as well, you guys can definitely subscribe the YouTube channel. We come live almost every day for some free live classes, for some free introductory classes. So you guys can definitely check that out. Cool. So thank you, guys. Thank you. Let's just wrap up. Take care, guys. Bye bye.